Hello, Heepsa here. Continuing with the third episode of magnetism produced by electric current. That was the second episode that we were going on. And now, specifically dealing in the same topic, that we have a straight wire. What we have is a straight wire with current. It is producing magnetic field, and we have to find the direction of field. This is the topic that we are continuing with, which was there in the second episode also. Okay. Now, last time we just did pure directions, not related to how it was dependent on the current direction. Okay, current पे भी तो the field will depend on what? एक ही इनपुट है उसके पास, तो the field will depend on the current only, the direction of current. So direction of field depends on the direction of current. Pure and simple. अगर current change होगा direction, magnetic field भी change हो जाएगी direction. That's it. Now what we are studying is the rule कैसे हम find करते हैं, which is called Maxwell right hand thumb rule. So first of all, very importantly, you have to take care that you are using your right hand. Please make sure, because we keep making this mistake. कभी हम left use करते हैं, कभी right use करते हैं, वो गलत हो जाता है, एकदम opposite answer आ जाता है. So take care that using your right hand while solving the question. Okay. Then this I've written कि किस topic से related है. टॉपिक है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा है और वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर रहा है और हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है. सो इट इज़ यूज फॉर दिस टॉपिक ओनली. ओके, और दूसरे टॉपिक मोटर प्रिंसिपल इंडक्शन वगैरह के लिए नहीं. स्ट्रेट वायर ही है सिंपल सा, उसके अराउंड एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है और डायरेक्शन निकालनी है. सो दिस रूल इज यूज्ड ओनली अंडर दीज कंडीशंस. You have to be careful to use right hand. Now, in this right hand also, you have to be very clear. Now, for how do you form your hand? ऐसे हमारा hand. This is my right hand. I hope you can see in your this thing only. This is my right hand. All I have to do is make a thumbs up. All I have to do is make a thumbs up, down, thumb, up, down, side, whatever. I have to make a thumbs shape. Okay, so this is my thumb and these are called my curled fingers. These are called my curled fingers. All right. Now the thumb starts from here and ends here. This is the knuckle. This thing, you know, these bones are called knuckles. Do you know this? These bones, जो यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं, इनको knuckles बोलते हैं. So the thumb starts from this knuckle और ये इस नाखून पे खत्म होता है. The thumb is going like this from knuckle to nail. हमेशा हमें याद रखना है थंब की डायरेक्शन क्या. इसको हम thumbs down क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है. thumbs up क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है. Always from this point to this point is what it states the direction. अब अगर मेरा हाथ ऐसे, तो मेरा फिंगर की डायरेक्शन भी वही होती है. रिस्ट से शुरू करो और नेल तक जाओ. तो अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है तो मैंने डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. आई डोंट वांट टू नेम इट राइट नाउ, बट द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द रिस्ट एंड आई एम गोइंग टू द. यू कैन मेक अ हाफ सर्कल ऑल्सो. यू कैन नॉट, डोंट नीड टू से, नहीं तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ भी तो आ रही है. नो नो, जस्ट मेक अ हाफ सर्कल. स्टार्ट फ्रॉम योर रिस्ट, go to your nail. Start from your wrist, go to your nail. Okay, now let's see. If my hand is like this, let's understand the direction of this. Okay, we've done directions, right? आप viewer हो, मेरा ये right hand है and the hand somehow looks like this. Thumb की direction कहाँ है? It's in
फ्रंट, इट्स टुवर्ड्स द फ्रंट, तो उसको क्या बोलेंगे? North direction. The thumb is pointing. Remember, front wall was north direction, episode 2. So when I'm standing like this, my hand is like this, the thumb is pointing towards geographic north direction. It's called geographic north. Geography wali east west north hoti hai. So the thumb is pointing towards the front wall, इसलिए हम उसको geographic north कहते हैं. अब फिंगर आपको कैसे दिख रही है, या ये सब पार्ट कैसे दिख रहा है? आपको दिख रहा है, अगर मैंने रिस्ट से शुरू किया और नेल तक लेके गई तो क्या शेप हुई? ऐसे. आपको ऑलमोस्ट पूरा सर्कल दिख रहा है ना मेरा? ये देखो, पूरा सर्कल दिख रहा है. सो मैंने रिस्ट से शुरू किया और ये यहाँ पे ख़त्म किया, लाइक दिस, लाइक सी. अगर मेरा रिस्ट ये है तो इज इट नॉट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस, कि मेरा रिस्ट यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे मेरी फिंगर खत्म हो गई. नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये क्लॉक के जैसे चल रहा है. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डू वी गेट इट? ऑलराइट. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नाउ सपोज I keep my hand like this. Alright? You are here and I'm okay. Let me keep my hand like this. This is the second example we are taking. My hand is like this. Where is my thumb pointing towards? My thumb is pointing towards left side. So according to episode 2, it's pointing towards geographical west direction, right? It's pointing towards, because the thumb is going like this, it's pointing towards geographical west direction. That means the current is going towards geographical west. That's simple. Now what about my fingers? आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या पूरा सर्कल नजर आ रहा है मेरा? आपको मेरा पूरा सर्कल नहीं नजर आ रहा है. आपको मेरा ये पार्ट हैंड का नहीं नजर आ रहा है. आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ ये थोड़ा सा, और फिर ये सब गायब हो गया. थोड़ा सा ये सेक्शन दिखाई दिया और फिर पूरा गायब हो गया. इफ आई रेप्लिकेट इट विद दिस, सी, यहाँ से मेरी रिस्ट शुरू हुई, यहाँ से मेरी रिस्ट शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई. यहाँ से मेरी रिस्ट शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई. अब आपको क्या पूरा सर्कल नज़र आ रहा है इसमें? देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है रिस्ट की, आपको नज़र आ रही है? पूरा पूरा नज़र आ रहा है ना? आपको क्या होगा? आपको मैंने ऐसे रखा है, अपनी मेरी रिस्ट यहाँ पे है. ओके, तो जब मैंने ऐसे रखा तो मेरी रिस्ट यहाँ से शुरू हुई और नेल वहाँ पे कहीं जाकर. आपको मेरे नेल्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, ये भी नहीं दिख रहा है. ऑल यू कैन सी इज दिस लाइन, और माई हैंड इज गोइंग लाइक दिस. यू कांट सी इट लाइक अ सर्कल. यू कैन सी इट एक छोटे से विजन में, यू कैन सी इट गोइंग लाइक this. Now, which direction is this? This is vertically upward direction, or coming out of the table direction, coming out of the paper direction. So if I keep my hand like this, that means the current is going towards west. The fingers, the wrist is starting from here and the fingers are somewhere there. I can see, you can see only this much section. You cannot see the full section. So you can see only this full section. So you will call the magnetic field का direction, because fingers क्या दिखाती हैं? Magnetic field का direction. तो your magnetic field as seen by you will be vertically up. That is the whole concept. Okay, now let's take I hope the basic where it is used, how it is used is clear. Now we'll take up specific examples, maybe which are not given in form of diagrams. They're given in form of words. Words में दे देते हैं, करंट यहाँ जा रहा है, करंट वहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ. तो उसमें तो हमें अभी तो मैंने ऐसे रखा है, फिर इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना ये करंट. ओके,
let's see, let's form a question. Okay, so let's see, they say that the current is going towards geographic south direction. The current is going towards geographic south direction. I am seeing it from above the wire. मैं वायर के ऊपर से देख रही हूँ. I'll just explain. State, ये क्या हो गया स्टेट को? State direction of magnetic field. I told you I'm not using magnetic field again. B बन गया. अब डायरेक्शन का भी डायरेक्ट बन गया. अब देखो पता नहीं क्या क्या शॉर्ट टर्न बन जाने वाले हैं. It got very difficult to write so much. Okay, so let's now we need to. What is this? अभी तो कुछ ऐसे abstract नजर आ रहा है. हवा में क्या west क्या क्या south क्या. So first, let's see. So we always use what in school, in class, you always see the entire class using a pen and dancing like this. You use a pen because that's what is handy to you. I'm using this so that it is big enough for you to clear. This is my current. This is my wire. Okay. And these are my current directions. See, current is going here like this. I've marked these. I hope it is visible. Okay, now we are saying that the current is going towards geographic south. अब south है कहाँ? Is this south? This is not south. South क्या हमने explain किया था? जो हमारे back पर होता है, जो हमारे back side पे होता है, वो south direction होता है. Now they are saying the current is going towards geographic south. So what will I do? If this is my wire, the current has to go towards geographic south. See, this is the direction of current. Yes. So मैंने current को geographic south की direction में ले जाना शुरू कर दिया. I have held it. I'm holding it like this. First statement I'm used. Now I have to hold this wire according to the thumb rule. If I have to find direction, I have to hold it in right hand thumb rule. How do I hold? The thumb should be in direction of current. थंब ऐसे हाथ बनाया मैंने, लूज छोड़ा, ऐसे करूं कि ऐसे करूं कि ऐसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. द थंब शुड बी इन, ये करंट की डायरेक्शन है तो मैंने इसको ऐसे किया और ऐसे पकड़ लिया. बस ऑल आई हैव टू डू इज होल्ड दिस वायर इन द मैनर कि थंब की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो जाए. दैट्स ऑल वी हैव डन. फर्स्ट पार्ट इज डन. Now you're seeing it from above the wire. Okay, we take it down. I'm seeing it from here. Good. First, let's find out कि इसकी field होने कैसे वाली है. It has to go from my wrist. It has to turn and come to my finger. Start from the wrist, come to my finger. So can I say? Start from my wrist. Where is my wrist? Oh God. Oh. Maybe I'll need. Okay. Start from my wrist and go like this. Okay. It will be going like this. आपके फ्रंट से देखोगे तब ये कौन सी डायरेक्शन है? फ्रंट से देखोगे, अगर आप साउथ से देख रहे हो अपनी तरफ से, यू आर इन साउथ, अगर आप साउथ से देखोगे तो सी इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट हमें इन्होंने कहाँ बोला है? व्यू फ्रॉम टॉप. नाउ इफ आई एम व्यूइंग फ्रॉम टॉप, मुझे ये सब कुछ तो दिख नहीं रहा है. रिस्ट दिख रही है नहीं, ये दिख रहा है नहीं, मुझे थोड़े से नकल्स दिख रहे. तो जब ऐसे फील जा रही है मुझे सिर्फ टॉप का इतना सा सेक्शन दिखेगा. यहाँ से आया 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 फील्ड आया 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 और सिर्फ इतना दिखा कि यहाँ गया और फिर नीचे वाला जाते हुए नहीं दिख रहा.
तो मुझे, अगर मैं ऊपर खड़ी हूँ तो मुझे क्या दिखाई देने वाला है? मुझे ये नहीं दिखाई वाली है, ये नहीं दिखाई देने वाला, ये ही सिर्फ दिखाई देने वाला है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, if I'm seeing from top, the magnetic field is going towards geographic rest. That is what the solution is. Now, how do we write it? Okay, how do we write it? It's simply just in word. You can't draw it because it's a 3D diagram. So what we write? Current. Just write the same thing in short. South. Magnetic field. Okay, no. How you're supposed to write this answer in very short and you'll get full marks even if you don't write full sentences is, first, what is the procedure, what is the phenomena happening, what is the principle happening, कौन सा, क्या चीज, क्या theory है इसके behind. The principle is wire with current. This is how you write. I'm telling you how to write in exam. Wire with current produces circular magnetic field. This you've named the principle. Okay, then we can also say it was discovered by Ørsted. You can mention that, just next extra point. Now, which rule will you use to find the direction? You are using Maxwell right hand thumb rule. So sorry, but this is my shortcut. I can't. So, what rule are you using to finding the direction? To find the direction, you're using right hand thumb rule. Now, what is the given data? The data is current is towards south. Now, I cannot draw south. Please understand why? Because वो geography में होता है कि हम वो ऐसे बना देते हैं, पर हमने क्या सोचा है कि मैग्नेटिक फील्ड के उसमें हमें साउथ ऐसे दिखाना है. अब ऐसे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे ना? तो जस्ट राइट ज्योग्राफिक साउथ. ऑलराइट, नाउ field we discussed. I'll show you again. The current was going towards this. Your hand became like this. You have to view from top. The circles are coming like this. तो अगर मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसे दिखाई दे रहा है. Right? Verify it again, and we'll get the magnetic field is toward geographic west. And this finishes your entire question. Whether it is for 2 marks or whether it is for 4 marks, this will fetch you 2, 3, 4. जितने भी marks का वो question है, this will fetch you all those marks. Good? Clear? Okay. Now I make another part of this, the same question. The first part of this question is, I'm done with this, okay? I'm finished with this. Now the first part was as seen from above the wire. Now the second part of the same question I'm saying as seen from north. I want to see the magnetic field from the north. अब उसका क्या मतलब हुआ? करंट तो वैसे ही रहने वाला है, टुवर्ड साउथ जा रहा है. ये ऐसे मेरा करंट आ गया, मैंने हैंड को ऐसे पकड़ लिया, थंब. अब मुझे देखना कहाँ से? नॉर्थ से. नॉर्थ कहाँ है? ये? नो, द नॉर्थ इज हियर. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सी फ्रॉम लाइक दिस. आई हैव टू कीप माय हैंड स्टडी एंड सी. When I see from here, you please take your own pens like this. This is always your current direction. You hold it like this and go towards, this is your north. The front side is north, right? You see this. You do like this. Okay, I'm showing because, okay. So I go to in the north direction, oh God, and you will notice that I'm seeing the full circle. I can see my full, I can see my wrist also, this part also, finger also, nail also. I can see the full circle. Now, if I see the full circle, it is going in this direction.
And for me, this direction, you check yours. You check yours, your answer will also be. For me, this direction is a full circle, which is a clockwise direction. So how will the answer change? For the B part, if I'm answering the B part, the principle remains same. The wire is straight and it is carrying current and it is producing circular field. Rule also remains the same. Current की direction is remaining same. But magnetic field जो हमें दिख रही है, it has not changed. Please note, it has not changed. हमें क्या दिख रही है? पहले हमें towards west दिख रही थी, अब हमें clockwise दिख रही है. If I'm seeing from north, I can see it clockwise. That's it. The same question as seen from a different point of view, you can see it in a different way. You'll have to explain the direction of magnetic field in a different manner. Now the answer becomes clockwise. I'll quickly take one more example. Okay. So there is a straight wire having current in, now let's see, where do you want the current to be? Having the current in east direction, having the current in geographic current towards geographic east. This is a wire which is carrying a current towards geographic east. Fine. Now you have to find magnetic field. You have to find magnetic field. If I see it from, let's also have two parts from it. The current is going like this. One I want to see from east only, my wish. I want to see from east. And the second, maybe I want to see from south. Okay, I want to see from south. These are the two parts that we have to solve. Okay. Or let's do not south, let's do vertically down, as seen from vertically down. Somebody is standing below the wire and वहाँ से वो देख रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड कैसे नजर आने वाली है. ठीक है, जो दोनों पर्सन X एंड पर्सन Y है, एक उसके ईस्ट में खड़ा है, एक उसके साउथ वर्टिकली डाउन में खड़ा है, उन दोनों को उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं? द मैग्नेटिक फील्ड रिमेंबर विल नॉट चेंज. इट इज़ नॉट चेंजिंग, ओनली हाउ वी एक्सप्लेन, हमने कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, वो विल चेंज. ओके, फॉर समबडी आई मे बी वेरी zero size. I think myself as zero size, but for somebody, you all teenagers, I'm like a fat elephanto. So as seen from person X, what do you think about the magnetic field? And as seen from by person Y, what is the magnetic field? Let's solve the first part. Okay, the A part. How do we start? We write the principle first. Quickly I'm writing the principle. It remains same. There is a wire. I should write straight wire, because that's also important. Straight wire with producing, it has current and it produces magnetic field. This is the principle. Now, how do we find direction? What is the rule used for finding the direction? The rule used is Maxwell's right hand thumb rule. Okay, then what is the direction of current written? You don't have to think anything, just keep copying down. यहाँ तक तो सिर्फ copy हो रहा है. Current is towards geographic east. Now in this case, we can draw the current. It will be helpful for us also.
ओनली, हमारे लिए ही फायदा होगा. जोग्राफिक ईस्ट हमें पता है इस ऐसे होती है. सो आई कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस. करेक्ट. दिस इज द करंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट. Good. Now the only thing now we have left with is magnetic field direction, which we'll quickly do. Now the current is towards geographic east. East is here. So I'll put my this thing, my dandi here. The current is going towards east. Fine. Now I have to put my right hand. Make it a thumb. ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ? ऐसे रखना है कि ये thumb direction of current में रहे. Thumb की direction, current की direction सेम रहे. तो मैं ऐसे पकड़ लूँगी. गुड, पकड़ लिया मैंने. वेरी गुड. मेरी फिंगर कैसे हो गई अब? ऐसे. मेरा रिस्ट यहाँ है, मेरी फिंगर यहाँ जा रही है. गुड. नाउ वेयर डू आई एम सीइंग फ्रॉम? आई एम सीइंग फ्रॉम ईस्ट. ओ माय गॉड. सो आई हैव टू, oh, am I crossing you? I have to do like this. 1 minute, 1 minute. 1 minute. So sorry. Hi, I'm back. So we were, where is it? The current is going towards east. So the current is going towards east. I held it like this so that the thumb is in parallel condition. My hand is twisting like this. Now I want to see from east. East मतलब मुझे खुद को east की तरफ डालना पड़ेगा और हाथ वहीं रहेगा. My finger, my wire, my hand will remain there. I will have to shift my body towards the side. I shifted here, and what do I see? Oh, when I see from proper east, I can see my this thing, wrist also. I can see my this part also. I can see my nails also. I can actually see it like this. See, आपको टिल्ट करके दिखाती हूँ. I can actually see it from like this कि यहाँ से मेरी रिस्ट शुरू हुई और मेरी फिंगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है. देखो, करेक्ट. मेरी रिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है और मेरी फिंगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है. तो मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन हो गई? आपके लिए कौन सी हुई? मेरे लिए तो क्लॉकवाइज हो रही है, आपके लिए भी क्लॉकवाइज होगी. सो द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इफ आई सी फ्रॉम east, okay, we should also write see from where. If I, third point should be where am I seeing it from? If I see from east, my magnetic lines appear full circles and they appear clockwise. Now I quickly will do the second part of it. The same thing is there, principle remains same. The rule we use the same, but now where am I seeing from? It's the same wire which was there. Now I want to see from vertically down. I want to stand below it. See from vertically down, or you can say under the table. I want to see it from the table. Current direction remains the same. It has not changed. It is towards geographic. Please note that this word is geographic is very, very important. Right now you will not understand the importance, but in the next topic you will really need this geographic word. The current is towards geographic east, and I draw it also because it's easy to draw east direction. Now all is left with is magnetic field. हम गए, हमने अपना डंडा उठाया, ईस्ट किया, अपना हाथ थंब ऐसे करा तो ऐसे पकड़ लिया. अब मुझे देखना कहीं नीचे से. अगर मुझे नीचे से देखना है, इधर आई कैन डू दिस और आई कैन डू लाइक दिस. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस. आई एम लाइक, और आई कैन डू लाइक दिस. ओके, this is my wire, this is my thumb, and I want to see from vertical down. Okay, from vertically down, my wrist starts from here, ends here, starts from here, ends here.
what do I just see? I see that my wrist is oh no, this one is not working. This also. So my wrist is starting from here. ये अब जब मैं नीचे से देख रही हूँ मुझे ये सेक्शन नहीं दिख रहा है, मुझे ये सेक्शन भी नहीं दिख रहा है, मुझे ये फिंगर वाला सेक्शन भी नहीं दिख रहा है. ऑल आई कैन सी इज जस्ट द फिंगर्स गोइंग बैक इनटू द पाम. क्या दिख रहा है आप ध्यान से देखो. जब मैं बिल्कुल अपने ऊपर करके रखूंगी, आई एम डाउन, द वायर इज ऊपर, I can't see this section clearly. I can't see this at all. I can't see this section clearly. All I can see is my fingers entering back into my palm. This direction. And what is this direction? This is south. Correct? This is south. That means the field is towards geographic south. And this is how we finished this question, both the parts. Once the answer was something clockwise or something, and once the answer for magnetic field has come out to be geographic south. Remember, the field hasn't changed, only our perspective has changed, our description has changed, depending on where we are seeing it from. All the best. Practice a few questions from NCERT, from here, there. Verify your answers. Use you don't have a stick. Use your pen. Always keep this side as your direction of current. Always just easy. So you'll always hold it like this. The nib side, hold it like this wherever the direction is, and get the direction of magnetic field. Position yourself nicely in the direction when they tell you to. All right. Thank you.